In the last class, we started off with the chapter that is when India got the independence. What were the challenges? Challenges, matlab problems. And the three challenges which we had studied is, first of all, it was ki kaise, how we have to shape up a nation which should be united. And this was because of the backdrop of partition की वजह से जो backdrop हमारा था उसकी वजह से. Secondly, हम लोगों का था कि how to establish a democracy. Again, partition का effect था, and there were fears among people. And the third challenge was a major कि आने वाले टाइम के अंदर जो है how the development should be taken place. So the first challenge we had already done in the last class कि the challenges came in the backdrop because India was partitioned, and the partition was not a cheap affair, it was a costly affair. And that was because it also brought in rape, murder, killing, mass rehabilitation, mass migration. एंड ऐसे में एक कंट्री को साथ रखना वॉज वेरी डिफिकल्ट. देयरफॉर जब ये बात हो रही थी तो पार्टीशन को ही हम लोगों ने जो है एंटिसिपेट नहीं किया था. लेकिन जो पार्टीशन के साथ में जो आपका वर्स्ट पार्ट आया था, द अगली पार्ट, that was not at all anticipated by any of the leaders on either side. ना हमने किया था ना उन्होंने सोचा था. किसी ने ऐसा नहीं सोचा था कि हमारे मतलब कि द पीपल वुड बी किल्ड. इट वाज जस्ट मतलब उन लोगों ने जो है उसको बड़े लाइट हार्टेडली लिया था कि पार्टीशन होगा, इधर के लोग इधर आ जाएंगे, उधर के उधर आ जाएंगे. एंड इनफैक्ट इफ यू लुक इनटू दीज एरियाज, अगर आप आगे देखोगे तो देयर वर सम जवाहरलाल नेहरू जो है उन्होंने बोला था, दिस इज अ पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है कि we have a Muslim minority who are so large in number that they cannot, even if they want, go anywhere else. भाई अब पाकिस्तान का जो एरिया है वहां तो चलो मुस्लिम चले गए, लेकिन जो बाकी लोगों में रहते थे, जो लखनऊ में रह रहे हैं, जो मीरठ में रह रहे हैं, उनका क्या? दिस इज बेसिक फैक्ट विच देयर कैन बी नो आर्ग्यूमेंट. आप उनको इवैक्यूएट तो नहीं कर सकते हो ना, खत्म तो नहीं कर सकते हो. Whatever provocation from Pakistan and whatever indignities and horrors inflicted on non-Muslim, we have got to do this minority in a civilized manner. वहां जो हुआ हम ऐसा नहीं करेंगे. We must give them the security and rights of citizens in a democratic. And if we fail to do so, we shall have a festering sore. मतलब एक ऐसा wound, एक ऐसी चोट जो शायद कभी ठीक नहीं होगी. और अगर आप इसी का उनके तरफ से देखोगे जो 11 अगस्त 1947 में बोला गया था by Muhammad Ali Jinnah. This is again one which came in exam once. We should begin the work in that spirit in course of time, that all these angularities of majority and minority community, the Hindu, Muslim, because even as regards Muslim, you have Pathan, Punjabi, Shia, Sunni, and among Hindu, you have Brahmin, Vaishnav, etc. You are free. You are free to go to your temples. You are free to go to your mass. You are free to go to any place of worship in the state of Pakistan. You may belong to any religion, caste, or creed. It has nothing to do with the business of the state. दोनों प्रेसिडेंट्स मतलब दोनों तरफ, एक तरफ आपके जिन्ना और दूसरी तरफ जवाहरलाल नेहरू. जिन्ना ऑल्सो प्रॉमिस दैट देयर वुड बी, मतलब उन्होंने भी यही एंटिसिपेट किया था
कि there would be secularism and they would be given the freedom. But ultimately what happened is, हम लोग जब आजाद हुए तो that was not a freedom which came without a price. And उसका एक प्राइस जो था, that was Mahatma Gandhi's life. To not to come into the controversy, let us take it in the political sense. Some people were against Mahatma Gandhi because उनको लग रहा था he was supporting Muslims. Whereas Mahatma Gandhi himself did not want to go for any violence. He wanted that each of the country should not, any country should not be partitioned. तो उनका जो main था not to be partitioned. But when things did not go in favor, because Mahatma Gandhi was not the only one person who was supposed to take all the decisions. There were so many leaders. And when the things did not go, he agreed upon. In fact, जब हम लोग आजादी मना रहे थे, तो he was not in Delhi at Red Fort. He was in Kolkata. He was trying to avoid those gruesome conflicts which was there in Hindus and Muslims. Ultimately, what happened is there was always a contemplation कि Mahatma Gandhi is not supporting, and उनको जो pay करना पड़ा था, that was with his own life when he was assassinated by one of the members of RSS for this. On the 15th August, Mahatma Gandhi did not participate in the Independence Day celebrations. He was in Kolkata in the areas which were torn by gruesome riots between Hindus and Muslims. He was saddened by the communal violence and disheartened by the principles of ahimsa and satyagraha that he had lived and worked for had failed. और वो भी तब जब एक्चुअल में उसकी जरूरत थी. He went to persuade the Hindus and Muslims to give up violence. His presence in Kolkata greatly improved the situation, and coming of independence was celebrated in a communal harmony. जो हमने सबसे आगे जो सबसे पहले एक वो फोटो देखी थी with both the, ये है, both Hindus and Muslims दोनों जो है they are together and in harmony. But this did not happen immediately. ये पहले आपके riots हुए, उसके बाद he tried to persuade, and then this particular thing happened. Gandhiji's prayer meetings attracted large crowds, but this was short-lived as riots erupted once again, and Gandhiji had to resort to a fast to bring peace. उन्होंने वही चीज को करने की कोशिश की जो सबसे ज्यादा करते थे, स्ट्राइक. नेक्स्ट मंथ गांधी जी मूव टू दिल्ली, जहां फिर वहां पर भी था. He was deeply concerned about ensuring that Muslims should be allowed to stay in India with dignity as equal. He was also concerned about the relations between India and Pakistan. He was unhappy with what he saw as the Indian government's decision not to honor its financial commitment to Pakistan. क्योंकि जब आपने कोई कमिटमेंट कर दिया, आप नहीं कर रहे हो, तो डेफिनेटली इट वुड dent your relations. With all this in mind, he undertook what turned to be his last fast in January 1948. As in Kolkata, his fast had a dramatic effect. Communal tension reduced. Muslims of Delhi and surrounding areas could safely return. The government India agreed to give Pakistan its dues. सब ठीक हो रहा था. His actions were not, of course, liked by all. Extremists in both the communities, Hindus भी और Muslims भी, जो आपको मैंने बोला, इधर वाले उनको बोल रहे थे, उधर वाले इनको बोल रहे थे.
He was particularly disliked by those who wanted Hindus to take revenge or who wanted India to become the country for Hindus, just as Pakistan was for Muslims. मुद्दा क्या था कि पाकिस्तान का जो क्रिएशन था दैट वाज ऑन द कम्युनल बैकग्राउंड ऑफ मुस्लिम कंट्री. तो उनका मानना था कि अगर वो मुस्लिम कंट्री बना रहे हैं तो हमें हिंदू कंट्री क्यों नहीं बनाना चाहिए. बट कंट्रीज कभी भी हिंदू मुस्लिम्स नहीं हो सकती हैं. हम उनको टाइम दे सकते हैं, हम उनको, लेकिन वी कैन नॉट इवैक्यूएट. ऐसा तो ह्यूमन इवैक्यूएशन कहीं पर भी नहीं हो सकता है. इवन व्हेन द जर्मनी का जो अटैक था, देन आल्सो द नाजीज कुड नॉट बी इवैक्यूएटेड. He was convinced. They accused Gandhiji of acting in the interest of Muslims in Pakistan. Gandhiji thought these people were misguided. He was convinced that any attempt to make India into a country only for Hindus would destroy India. Because India never was a country for any one religion. His steadfast pursuit of Hindu-Muslim unity provoked Hindu extreme so much that they tried to assassinate him many times. 3 बार तो उन पे किया था. Despite this, he refused to accept armed protection and continued to meet everyone during his prayer meetings. Finally, on 30th Jan, one such extremist, Nathuram Vinayak Godse, walked upon Gandhiji during his evening prayers and fired 3 bullets, killing him instantly. And this ended a long stop for truth, non-violence, justice and tolerance. But इसका सबसे जो फायदा क्या हुआ? It had a magical effect on the communal situation. Partition-related anger and violence subsided. Government cracked down the organizations that were spreading this hatred. RSS were banned for some time. Communal politics began to lose its appeal. मतलब politics on the basis of religion. But बाद में फिर से it was there. In any democratic state, whether it is India or Pakistan or any country which calls it, you cannot claim your right on a religion. Muslims छोड़ दो, we have Buddhists, we have Jains, we have Parsi. So it becomes the main problem. हमारा जो आया था वो ये था कि Muslims ने claim किया था that they wanted a separate Pakistan. इसीलिए the Hindus were also agitated कि जब तुमने मांगा है तो जाते क्यों नहीं. तो justification is from both the sides, but जिन्होंने नहीं मांगा था they were also affected. So this is how the first challenge, that is bringing unity of a diverse population, was done to some extent. Now the second is princely states. I told you that we were having the problems that अगर आप इंडिया का मैप देखते हो, this is the map. तो ये देखो, ये भी हमारा ही हिस्सा था, ये भी हमारा ही हिस्सा था, और अभी अगर आप देखते हो तो दिस इज ऑल्सो अवर. लेकिन उन दिनों में some of these states were princely. ब्रिटिश ने जो है they did not give any what you call as क्लियरिटी कि भाई प्रिंसली स्टेट को किसके साथ जाना चाहिए. ईदर दे शुड हैव गिवन कि भाई इतने पोर्शन में जो प्रिंसली है दे शुड एक्सीड टू इंडिया, इतने पाकिस्तान में जाएं, बट इट वाज नॉट. इट वाज गिवन द फ्रीडम टू द स्टेट्स. आपकी मर्जी है, आप इफ यू वांट टू एक्सीड टू पाकिस्तान एक्सीड इट, और टू इंडिया करो, और एल्स if you want to remain independent तो रहो. Many of the states even wanted to remain independent. But अब independent रहने का मतलब क्या है? Lots of again other problems. सबसे बड़ी problem है कि अगर आपका हैदराबाद अगर इंडिया के बीच में है तो then what will happen? From one, हमारे एक ही स्टेट से हमें जाने के लिए we may need to shift to one more country.
फिर भी द इंडियन गवर्नमेंट टुक अ वेरी stern but a very patient step, एक एक करके सॉल्व किया. एंड देयर वाज द रोल ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है वो इसमें सबसे बड़ी चीज है, और ये आपके पेपर के अंदर जो है आता भी है. मतलब इवन दो इट इज नॉट इन दिस, ये जो आपका 2024-25 वाला जो होगा उसके अंदर आपका सरदार पटेल का जो रोल है वो पूरा है. एंड इवन इन द सीबीएसई क्वेश्चन पेपर इट इज देयर कि रोल ऑफ सरदार पटेल हैज टू बी टॉट टू द चिल्ड्रन. British India was divided into what were called British Indian provinces and princely states. The princely states were indirectly ruled by the British, and the provinces directly. They were directly. On the other hand, several large and small states ruled by princes called princely enjoyed some form of control over their internal affairs as well as long as they accepted the British supremacy. मतलब वो काम करते ब्रिटिश के अंडर थे, लेकिन कुछ चीजों में उनको फ्रीडम था, वो लोग उसकी जगह टैक्सेस वगैरह भी देते थे. दिस वॉज कॉल्ड पैरामाउंट. सी प्लीज अंडरलाइन दिस बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड अ वन मार्कर क्वेश्चन. व्हाट इज पैरामाउंट? पैरामाउंट मतलब सुप्रीमेसी. Princely states covered 1/3 of the land area of British Indian Empire, and 1 out of 4 Indians live in princely land. तो कैसे चलेगा? Now the problem. Just before independence, it was announced by the British that with the end of their rule, paramountcy of British crown over princely would also lapse. Means as many in 565. मतलब ये जो थे इतने सारे थे. There were 565. One marker question. अब ये 565 स्टेट्स अगर सोचो कि आज अगर होते तो हम 565 कंट्री से गिरे होते. The British government took the view that all these states were free to join either Pakistan or India or remain independent. This decision was left not to the people but to the rulers of these states. This was a very serious problem and could threaten the very existence of United India. लोग क्या चाहते थे वो नहीं था, रूलर क्या कर रहा था, और वही हुआ. फर्स्ट द रूलर ऑफ ट्रैवनकोर, ये मैप में भी आया था. First of all, the ruler of Travancore announced that the state had decided on independence. वो अपने आप ही रहेंगे. They would not be part of any country. The Nizam of Hyderabad made a similar announcement. उसने भी यही बात बोली. The next day, the Nawab of Bhopal were averse to join the Constituent Assembly. The response of the rulers of princely state meant after independence it was real possibility India would get further divided into small countries. हैदराबाद एक कंट्री हो जाता, ट्रेवनकोर हो जाता, भोपाल ऐसा हो जाता. The prospects for democracy for the people in these states also looked bleak. This was a strange situation. क्योंकि इंडिया तो उस हर एक चीज को यूनाइट करना चाहता था और डेमोक्रेटिक रहना चाहता था. Whereas in most of the princely states, government were run in a non-democratic, क्योंकि वो तो आपके मुनाकी थे, वो तो पॉपुलेशन को कुछ डेमोक्रेटिक राइट्स नहीं देना चाहते थे. तो अब क्या किया? How it was done. So here comes the role of Sardar Vallabhbhai Patel. The interim government, I told you that till we did not have the elections, it was the temporary government which was ruled by Pandit Jawaharlal Nehru. The possible division into smaller principality of different was against. The Muslim League opposed INC and took the view that states should be free to adopt any course.
भाई उनका तो मानना था कि भाई हम आपको जो करना करो, लेकिन इंडियंस नहीं चाहते थे कि ऐसा हो। ये भी वन मार्कर क्वेश्चन है। सरदार वल्लभ भाई पटेल वॉज इंडियाज डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर एंड होम मिनिस्टर ड्यूरिंग दिस क्रूशियल पीरियड। He played a crucial historic role in negotiating with the rulers of princely state firmly but diplomatically, मतलब उनको समझा बुझा कर, bringing most of them into the Indian Union। अभी देखने में आसान लग रहा है, but it was a complicated task at then which required skillful persuasion। For example, there were 26 small states in today's Orissa। सोचो, उड़ीसा हमारे लिए आज एक है, वहां 26 थे। सौराष्ट्र रीजन ऑफ गुजरात 14, 119 स्टेट्स, न्यूमरस अदर। तो कैसे लेकर आओ? सबको मनाना था, हर एक को टू बी। द गवर्नमेंट्स अप्रोच वाज गाइडेड बाय थ्री कंसिडरेशन। अब उन्होंने क्या अप्रोच लिया था? फर्स्ट, मतलब इन स्टेट्स को लाने के लिए, फर्स्ट, people of most of the princely states wanted to become part of Indian। Second, government was prepared to be flexible to give autonomy to some regions, like आपके मणिपुर में दिया था। That is why कुछ एरियाज में हम लोगों को स्पेशल प्रोविजंस देने पड़े थे। And the idea was to accommodate plurality and adopt a flexible approach in dealing with the demands। नहीं तो वो कहते ठीक है, आप हमें डिमांड नहीं दे रहे, हमें अलग कर दो। Thirdly, in the backdrop of partition, which brought into focus the contest over demarcation of territory, the integration and consolidation of the territorial boundaries of nation had supreme importance। भाई अगर ऐसे पार्टीशन होता रहा तो इंडिया और पार्टीशन होगा। तो उन्होंने तीन अप्रोचेस को अपने सामने रखा कि लोग क्या चाहते हैं। सेकेंडली, व्हाट, मतलब अगर लोग चाहते हैं हमारे साथ हो, तो ऐसा नहीं कि हम उन्हें जबरदस्ती अपने साथ रखेंगे। वी वुड गिव देम सर्टेन ऑटोनॉमी, जिससे कि उनको ये नहीं लगना चाहिए दैट दे हैव बीन फोर्स्ड टू बी एक्सीडेड। एंड थर्डली, एट द जो बैकड्रॉप हुआ था, अगर अभी हम उनको डिमार्केट कर देंगे तो हो सकता है कि ऐसे पार्टीशन एंड पार्टीशन के आफ्टर मैच जो हुआ था, द अगली कॉन्सिक्वेंस दैट कैन बी अगेन देयर। तो ये तीनों चीजों को लेकर इट द नेगोशिएशंस वर डन बिफोर 15th August 1947। Most of the peaceful negotiations had brought almost all the states whose territories were contiguous to the new boundaries of India into the Indian Union। The rulers of most of the states signed a document called Instrument of Accession, which meant that their state agreed to be part of the Union of India। तो सभी के साथ तो ये साइन हो गया था। अब रह गया था आपका जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर एंड मणिपुर। ये आपके मैप में आया हुआ क्वेश्चन है। दैट द मतलब कि आपके ABCD करके लिखा हुआ आता है एंड यू आर सपोज टू मार्क इट। जूनागढ़ इज इन गुजरात, हैदराबाद यू नो, कश्मीर आपको पता है, मणिपुर ऑन द ईस्ट, और ट्रावनकोर वन मोर वाज देयर। द इश्यू ऑफ, अब जूनागढ़ का कैसे इश्यू को सॉल्व किया गया था? इट वॉज रिजॉल्व आफ्टर अ प्लेबिसाइट, मतलब एक ओपन वोट। प्लेबिसाइट मतलब ओपन वोट हुआ जिसमें सभी को बोला गया कि यू कैन टेल योर चॉइस। एंड व्हेन द पीपल कंफर्म्ड कि दे वांटेड टू बी विथ इंडिया, तो इट वाज एक्सीडेड। बाकी आप आगे पढ़ोगे। एंड as I have already told you, कश्मीर हमारा the article 370 था हमारा। एंड राइट नाउ देयर वाज वन सीरियल और मूवी, उसमें दिखाया भी है कि हाउ इट वाज, मतलब कि उसको लिया गया था।
एंड मणिपुर ऑल्सो इट वॉज विद द हेल्प ऑफ जो हमारे सेकेंड प्राइम सॉरी डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर थे, ही हैड टू। धीरे धीरे करके दीज एरियाज वर एक्सीडेड, बट यस उसके लिए वी हैड टू गिव देम सर्टेन स्पेशल प्रोविजंस आल्सो। नाउ लेट अस कम टू हैदराबाद। हैदराबाद वाज वेरी कंटेजियस, वेरी मतलब कि प्रॉब्लमेटिक, बिकॉज हैदराबाद के जो लोग थे वो तो हमारे साथ आने के लिए डरे हुए, बट इंटरनली देयर वर सम प्रॉब्लम्स। They were not with the Nizam. The Nizam was using oppressive force. निजाम जो है उन पर जोर जबरदस्ती करता था, उन्हें मारना पीटना, रेप मर्डर, ऑल दीज वर कॉमन। एंड उसी वजह से इंडियन मिलिट्री हैड टू इंटरवीन एंड हैदराबाद को जो है इंडिया का पोर्शन बनाया गया। इट्स नॉट द एंटायर आंध्र प्रदेश बट द पोर्शन ऑफ हैदराबाद। Hyderabad, the largest of the princely states, was surrounded entirely by Indian territory. आपने भी मैप में देखा, इधर आंध्रा, उधर महाराष्ट्र, इधर some parts of old Hyderabad are today parts of Maharashtra, Karnataka, and Andhra Pradesh. अभी भी its ruler carried the title Nizam, and he was one of the world's richest men. He wanted an independent status for Hyderabad. He entered into what was called as standstill agreement with India in 1947 for a year while negotiating with Indian governments were going on. Standstill मतलब चीज को थोड़े टाइम के लिए टाल देना। उसने ये एग्रीमेंट किया होता कि इंडिया उस पर जबरदस्ती नहीं करेगी, तो फॉर अ पीरियड इट वुड बी केप्ट असाइड, फिर वो सोचेगा। बट इन द मीन टाइम a movement of the people of Hyderabad state against the Nizam's rule gathered force. इंडिया ने तो चलो आप करो ऐसा सोचा था, लेकिन वहां पर मूवमेंट स्टार्ट हो गया। The peasantry in the Telangana region in particular was victim of Nizam's oppressive rule and rose against him. वो उनके अगेंस्ट हो गए। Women who had seen the worst of this oppression joined this movement. Hyderabad town was the nerve center of this movement. The Communists and Hyderabad Congress were in the forefront of the movement. The Nizam responded by unleashing a paramilitary force known as Razakar. ये जो रजाकर वाला है ये वन मार्कर में आया हुआ है, मतलब उसके जो अपने लोग थे उनके थ्रू उसने अटैक करवाया। The atrocities and communal nature of Razakar knew no bounds. मतलब इनके तो जो एक्सप्लॉयटेशन थी वो आप सोच भी नहीं सकते हो। They murdered, maimed, raped, looted, especially the non-Muslims, क्योंकि हैदराबाद is a Muslim. The central government had to order the army to tackle the situation. तब हम लोगों को जो है, इवन दो हमारा स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट था, लेकिन फिर हमको आर्मी भेजनी पड़ी। In September 48, Indian Army moved into control the Nizam forces. After a day of intermittent fighting, ruk kar, the Nizam surrendered and Hyderabad acceded to India. You can visualize ये how it would have been in Hyderabad. Right now Hyderabad is nothing like Hyderabad. अभी तो हैदराबाद के बाद उसको उसके अंदर सिकंदराबाद was made and Sikandrabad is the capital of this Andhra Pradesh Telangana. If you अभी भी आप जाओगे तो you will find that Hyderabad is less developed as compared to सिकंदराबाद. सिकंदराबाद तो बिल्कुल आपका जो है नेक्स्ट टू मतलब कोई भी फॉरेन कंट्री के जैसा लगता है, मोर विथ मोर मतलब कि रोड्स क्लीन रोड सब कुछ। बट हैदराबाद अभी भी आपका काफी पिछड़ा लगता है। चार मीनार अभी फिलहाल के लिए आई थिंक चार मीनार इज बीइंग रिपेयर्ड। जब हम अभी गए थे रिसेंटली तो चार मीनार इज रिपेयर्ड। I have quite a number of relatives over there. My entire sister's family lives
So we go over there. Next is Manipur. A few days before independence, महाराजा of Manipur, ये पेपर में 1 मार्कर में आया था, उनका नाम क्या है? Bodh Chandra Singh signed the instrument of accession with Indian government on the assurance that internal autonomy of Manipur would be maintained. मतलब राजा जो है उसके पास अपना पूरा राइट रहेगा, लेकिन it would be part of Indian government. Under the pressure of public opinion, the Maharaja held elections and the state became a constitutional monarchy. As I said, the control will be under with the king, but Indian governments जो आपका constitution that would be. Thus, Manipur was the first of in part of India which held an election based on universal adult franchise. ये भी आपका important है. तो वहां पर एक्सीड तो हो गए, लेकिन अब हुआ क्या? I'll also explain this one. In the Legislative Assembly of Manipur, there were sharp differences over the question of merger of Manipur with India. While the state Congress wanted merger, other political were opposed. The government of India succeeded in pressurizing the Maharaja in signing the merger agreement in 49 without consulting the popularly elected Legislative Assembly of Manipur. जो इलेक्शन के थ्रू हुए थे, उनकी बदले उन्होंने महाराजा के साथ साइन किया था. This caused a lot of anger and resentment in Manipur, the repercussion of which are still being felt. Abhi recently also there were so many problems. This is the basic. क्योंकि उस प्रॉब्लम को वहां के बाद हमने सॉल्व किया ही नहीं. You can see this is Maharaja, and if you see यहाँ पे क्या लिखा है, states people, external affairs, defense, communication इनके पास है. तो क्या लिखा है? The people are, उनको दबाया गया है. No, don't get up, your highness, just give me this, that will do. उन्होंने क्या बोला है? This is सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनका अप्रोच. आप बस अपना ये दे दो, मीन्स गिव द एग्रीमेंट. तो महाराजा ने तो एग्रीमेंट दे दिया, लेकिन वहां के जो पॉलिटिकल पार्टीज थे, दे वर नॉट दैट मच इन सपोर्ट ऑफ दिस एक्सेशन, जिसका शायद आज भी अभी भी मणिपुर में प्रॉब्लम्स चल रही है. So this is where the problem still, because it has not been resolved. Next is how to reorganize the state. I gave you the example that day. I told you कि Andhra Pradesh was the first जहां विशाल आंध्रा मूवमेंट हुआ था, even before a proper commission was set up. The process of nation building did not end up with partition and integral. Now the challenge was to draw the internal boundaries. This was not just a matter of administrative division. The boundary had to be drawn in a way so that linguistic and cultural plurality of the country could be reflected without affecting the unity. यानी वो अपनी जगह पर भी है, लेकिन वो हमारे साथ भी है. During the colonial rule, the states were either on administrative convents या फिर just जहां जहां वो annex होते थे. That was there. Our national movement had rejected these divisions as artificial and promised the linguistic principle as the base of formation. In fact, in the Nagpur session of 1920, the principle was recognized for the reorganization of INC party itself. Many provincial Congress committees were also created by linguistic zone, which did not follow the administrative division. मतलब हमारा ब्रिटिश का एडमिनिस्ट्रेशन था प्रोविंसेस, लेकिन इनका चलता था ऑन द बेसिस ऑफ द लैंग्वेज. नागपुर, कोलकाता, मद्रास, ऐसे. Things changed after independence and partition. Our leaders felt that carving out states on the base of language might lead to disruption and disintegration. क्योंकि हम लोग पार्टीशन को देख चुके थे, तो अब दोबारा पार्टीशन करना उनके लिए थोड़ा खतरा था. इट वॉज रिस्की.
It was also felt that it would draw attention from other social and economic challenges the country would face. बाकी चीजों को देखना अभी जैसा है चलने दो. The central leadership decided to postpone the matter. The need for postponement was also felt because fate of princely state had not been decided. कैसे किया जाए? And memory of partition was still afresh. अभी आधे तो आए ही नहीं है और पार्टीशन में इतने लोग मारे गए हैं, और अगर हम अभी लोगों को ऑन द बेसिस ऑफ देयर लैंग्वेज करेंगे तो जो नए स्टेट्स आएंगे उन्हें कहाँ डालें? The decision of the national leadership was challenged by the local leaders and people. प्रोटेस्ट सबसे पहले आपका स्टार्ट हुआ इन द तेलुगु स्पीकिंग एरियाज ऑफ ओल्ड मद्रास प्रोविंस, जो अब आंध्रा के अंदर आता है, which also included the present day Tamil Nadu, parts of Andhra Pradesh, Kerala and Karnataka. The Vishal Andhra movement, ये था, that is separate Andhra, demanded Telugu speaking to be separated from Madras province, of which they were part, and made into separate Andhra province. Nearly all the political forces in Andhra region were in favor of linguistic reorganization of the Madras province, क्योंकि बड़ा ही प्रॉब्लम होता था. मद्रास, आंध्र प्रदेश, अभी भी अगर आप लोग वहां पे रहना शुरू करोगे ना, यू विल अंडरस्टैंड दोस, वो जो उसके जो बिट्स है ना वो हमें दिखाई देते हैं. लाइक माय डॉटर लिव्स इन पुणे, तो जब व्हेन आई गो टू पुणे आई स्टिल फाइंड दैट पुणे इज मोर ऑन टू कर्नाटका, नॉट महाराष्ट्र. So that residuals are still there. In Chennai, जो जहाँ हमारा कॉर्नर है, सबसे कोना, which is the bordering of Andhra, if you go there, you will find you are living in Andhra, not in Chennai. आपको ऐसा लगेगा. That's still there. The movement gathered momentum as a result of central government's vacillation. पुट्टी श्रीरामुल्लू, ये आपके पेपर का क्वेश्चन है. A Congress leader and a veteran Gandhi went into an indefinite fast that led to death after 56 days. अब ये जो विशाल आंध्रा मूवमेंट था, इन्होंने ही इसको स्टार्ट किया था, उनकी डेथ हो गई और इसकी वजह से वहां पर वायलेंट आउटबर्स्ट था. People took onto the streets, many were injured, many were dead. In Madras, several legislators resigned their state seats in protest. और तब आंध्रा आपका, तब स्टेट हमारा रीऑर्गेनाइज नहीं हुआ था, सिर्फ आंध्रा को अलग किया गया था in December 1952. This is a papers question. State reorganization आपका बाद में बना था. You can see, read the map and answer the question. This is, as I said, from which the states were carved. गुजरात कहां से हुआ? आपका मुंबई से, मेघालय, असम, हरियाणा आपका पंजाब प्रोविंस था, छत्तीसगढ़ आपका, दिस इज मध्य प्रदेश. टू स्टेट्स दैट वर अफेक्टेड बाय पार्टीशन आपके, एक तो पंजाब था और एक कलकत्ता, वो था वेस्ट बंगाल. टू स्टेट्स टुडे दैट वर वंस अ यूनियन टेरिटरी. गोवा. The formation of Andhra Pradesh spurred the struggle for making other states on linguistic lines in other parts of country. क्योंकि अब दूसरा प्रॉब्लम आ गया. एक प्रॉब्लम खत्म हुआ, that was the partition which got the ugly transformation. लोगों उस वक्त में नेशनलिस्ट मूवमेंट को लगा कि पहले हम बाकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लें, लेकिन आंध्र प्रदेश में मूवमेंट होने के बाद ये एक और संभावना हुई that maybe again there is one more violent, और भाई किसी भी स्टेट में ऐसा हुआ, one more death हुआ, so that would result in more violence. These struggles forced the central government into appointing a state reorganization commission in 53. 53 में ऑर्गेनाइज हुआ था और इन्होंने जो एक्ट पास हुआ था वो 56 में था. Both of them have come, तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेना. To look into the question of redrawing the boundaries, the commission in its report accepted the boundaries of state should reflect the boundaries of different languages.
On the basis of the report, the State Reorganization Act was passed in 1956 और जो हमारा पहला बना था 14 states and 6 union territories. So this is how जो हमारा second बना था that was the second one. मतलब कि कैसे हमारा state reorganize हुआ. One of the most important concerns in the early years was demand for separate state would endanger the unity of the country. भाई उनको लगा कि अगर हम उनको अलग करते जाएंगे तो वो होगा क्या, अलग अलग हो जाएंगे. हो सकता है दे में क्योंकि ऑलरेडी प्रिंसली स्टेट्स अभी आए नहीं थे, तो हो सकता है कि ये अलग हो जाए तो द कंट्री में डिवाइड इनटू डिफरेंट कंट्रीज. इट वाज फेल्ट लिंग्विस्टिक स्टेट्स में फोस्टर सेपरेटिज्म, अलग हो जाए, and create pressure for newly found nation. But the leadership under popular pressure finally made choice in favor of linguistic state. It was hoped if we accept the regional and linguistic claims of all regions, the threat of division and separatism would be reduced. Besides, the accommodation of regional demand and formation of linguistic scenes were seen more democratic. मतलब उल्टा हो गया. It was not that कि हम अगर उनको अलग करते हैं तो वो अलग हुए. इनफैक्ट उनकी बात को मानने की वजह से इट लुक मोर डेमोक्रेटिक क्योंकि पीपल्स चॉइस वाज kept in mind. Now it is more than 55 years. We can say that linguistic states and movement for the formation of these states change the nature of democratic politics and leader in some basic ways. अभी ये है कि linguistic states है तो autonomy है and India is following a federal system. The path to politics and power was now open to people other than small English speaking elite. पहले वही था कि सिर्फ कुछ लोग जो इंग्लिश बोलते थे उनको पावर मिलता था, बट नाउ इट वाज फॉर ऑल. Linguistic reorganization also gave some uniform basis to the drawing of state boundaries. हमारे जो है स्टेट बाउंड्रीज अभी जो है वो नॉट ओनली ऑन लैंग्वेज है, दे आर ऑल्सो बेस्ड ऑन कल्चर. जैसे आपका उत्तराखंड, जैसे हमारा उत्तराखंड, जो आपका उत्तर प्रदेश था वो आपके पहले उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों था. उत्तराखंड को इसलिए अलग किया गया था क्योंकि उनका जो कल्चर है वो अलग था. इवन इन उत्तराखंड ऑल्सो दे आर आस्किंग फॉर हरित प्रदेश. मतलब जो हरिद्वार वाला रेंज है उनको वो कहते हैं हरित प्रदेश कर दो. अभी भी वहां पर चल रहा है. मतलब अभी आई थिंक 6-7 months back had gone. तो वो कहते हैं अभी भी हम लोग यहाँ पे मूवमेंट करें. वी वांट दैट इट शुड बिकम हरित प्रदेश. मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़ दे आर ऑल्सो द सेम. उनका भी कल्चर की वजह से हुआ. आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना सेम कल्चर. It did not lead to disintegration of the country जैसा समझा, मतलब कि सोचा गया था. ऑन द अदर इट एक्चुअली हमारी नेशनल यूनिटी को उसने ज्यादा अच्छे से कर दिया. Above all, the linguistic states underline the acceptance of principle of diversity. When we say India adopted democracy, it does not mean it embraced a democratic constitution. उसके अंदर उन्होंने हर चीज को लिया. Not merely the form of election. The choice was larger. It was accepting people. उनके जो differences थे उनको भी पूरा किया. It was associated with the plurality of ideas and ways of life. So this is how Indian government tried to solve the second problem.
ये वाला जो मैप वाला क्वेश्चन है ये आप लोग करोगे। गुजरात वॉज कार्व फ्रॉम मुंबई, मेघालय असम, हरियाणा आपका पंजाब, पंजाब हरियाणा हिमाचल प्रदेश तीन थे, छत्तीसगढ़ आपका एमपी, टू स्टेट्स दैट वर इफेक्टेड बाय पार्टीशन, एक तो पंजाब आपका और एक आपका बंगाल। टू स्टेट्स दैट वर वंस, एक आपका गोवा, सेकंड आपका हिमाचल प्रदेश एंड थर्ड आपका मणिपुर। दीज वर ऑल मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ये सब आपके यूनियन टेरिटरीज थी। This is a map question which can come in the exam. So this is what we say, the adoption of state reorganization. And the third one, what we say is the development. Development के लिए we would be reading in the next chapter that India adopted what we call today as the socialist का जो आपका रशिया का जो मॉडल था उसको उन्होंने लिया था a planned development on the basis of 5 years. This is a complete chapter. So the acceptance of principle of linguistic state did not mean that all states immediately became linguistic. There was an experiment of bilingual Bombay state, Gujarat and Marathi. Then Maharashtra and Gujarat were created. Because Maharashtra goes for Marathis and Gujarat for the Gujaratis. There is a very minute difference, you know, if you are going by the road, you would see. In Punjab also, Punjab में आपका पंजाब, हिमाचल एंड आपका जो हरियाणा था, वहां पर प्रॉब्लम क्या थी? हिंदी एंड पंजाबी स्पीकिंग, पंजाबी अलग जाते थे, बट इट वाज नॉट ग्रांटेड विद अदर स्टेट इन 56. Statehood of Punjab came 10 years later. In 1966, when territories of today's Haryana and Himachal were separated from Punjab state. अभी भी आप देखोगे जो हरियाणा और पंजाब है, they are having the common capital, that is आपका चंडीगढ़. Another reorganization took place in 72. Meghalaya was carved out of Assam. Manipur and Tripura too emerged as separate states in the same year. Mizoram and Arunachal came into 87 and Nagaland much later in 63. Language did not, however, become the sole basis. I have already explained. In later sub-region raised demand for separate state on separate regional culture, complaint of regional imbalance. 3 such states, Chhattisgarh, Uttarakhand and Jharkhand. Chhattisgarh, Madhya Pradesh, Uttarakhand, Uttar Pradesh, Jharkhand, Bihar. The story of reorganization has not come to end. There are many regions where there are movements demanding separate and similar states, like Telangana in Andhra Pradesh, which has already been done. Vidarbha hai, Harit Pradesh in UP and northern region of West Bengal. But yes, still अगर इतना होने के बावजूद भी हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है that has been so strong, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, so therefore it is not easy to draw a boundary कि चलो आज के दिन they have to take up all the issues. Then if they find it that yes this can be carved, क्योंकि carving जो है it can come into different aspects. एक तरफ अच्छा है, like there is यूपी को कहा जा रहा था उसको अलग अलग हिस्सों में किया जाएगा because it's a very big state. But then there are problems. How can you mark one territory inside a state? So that becomes NCR जो region बना था दिल्ली के आसपास, it was also one of the state reorganization का एक problem था. हम कहते हैं हम लोग जो है जो हरियाणा का गुड़गांव हो गया आपका द्वार, मतलब वो वाला एरिया,
देन नोएडा, गाजियाबाद, हम इनको एनसीआर में लेकर आते हैं. वी डोंट कॉल इट एज यूपी, हरियाणा, वी कॉल इट एज नेशनल कैपिटल रीजन. So there are many problems that come across. लेकिन if the government is looking into these matters along with the state legislatives, then it is not that reorganize हो रहा है. It should not divide the country into different countries. So the three challenges which we studied in this chapter, the very first was how to ensure the unity, क्योंकि हमारी यूनिटी की जो नींव थी वो हिल गई थी. सेकेंडली, कैसे वो जो स्टेट्स हैं विच वर नॉट पार्ट ऑफ प्रॉपर इंडियन यूनियन, विच केम एज प्रिंसली स्टेट्स, उनको कैसे लेकर आया जाए. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारे लिए डेवलपमेंट को हाउ टू टैकल, because the development was not only on the basis of development of industries, it was on the basis of आपका social, economical, मतलब कि literacy. We had an overall, हमारा holistic development होना था. It was very difficult to bring everything, everyone under one umbrella and go for the desired one. But still, the governments at that time tried to solve it to much extent. So that is what we call the very first chapter, that is challenges to nation building. With this, the chapter is also completed along with NCERT. But before I end up, I want to say that please do read about Sardar Vallabhbhai Patel. You can add on. वैसे तो मेजर यही है. And there is a specific question, write a short note on that. He is, मतलब कि he was called as the one who had diplomatically, who brought everyone under the same umbrella. The role of Patel in uniting the country. Right. So with this, the chapter is complete.